Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SI Your Learning Partner, and I'm not here to teach you, actually I'm here to learn with you, grow with you। और मैं आज लेकर के आई हूँ एक बहुत ही चैलेंजिंग चैलेंज। किसके लिए? आपके लिए नहीं, मेरे लिए है। एक्चुअली मैं 30 वीडियोस पोस्ट करने जा रही हूँ रियल कॉन्वर्सेशन की। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए नहीं हूँ, मैं खुद को सिखाने के लिए हूँ, या आपके साथ में सीखने के लिए हूँ और आपके साथ में ग्रो करने के लिए हूँ। इसलिए ये चैलेंज मैंने खुद को दिया है ताकि ये चैलेंज मुझे प्रेशराइज कर सके टू स्पीक इन फ्लुएंट फ्रंट ऑफ द पीपल। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों किया है, बताती हूँ। जो मेरी टीचर थी उन्होंने एक बार मुझे बताया कि उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था कि उनकी बुक अपकमिंग में इस डेट को है, और उनको इससे प्रेशराइज फील हुआ था। उन्होंने काफी प्रेशर लिया था जिसकी वजह से उनकी बुक जल्द ही लॉन्च हो गई। तो मैंने भी ये चैलेंज अपने आप को दिया है, अपने आप को प्रेशराइज करने के लिए कि मैं फ्लुएंसी जल्द से जल्द ले आऊं अपनी स्पीकिंग में। आप भी मेरी इस जर्नी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 शर्तें लागू हैं। नंबर फर्स्ट, आपको टेंसेस आने चाहिए, जो कि मैं करा ही चुकी हूँ और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दूसरी शर्त है कि टेंसेस में जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं उनको 10 टाइम्स आपको बहुत आउट लाउड रिपीट करना है, और उसके बाद आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ डेली रूटीन आपके लिए। ये डेली रूटीन मेरा है, जो मैंने अपने लिए किया है। मैंने इसे पढ़ा है, मैंने इसे लिखा है, और मैंने कोशिश की है कि कहाँ मैं सुधार कर सकती हूँ। मैं ये चाहूंगी कि आप भी अपना डेली रूटीन इसी तरीके से बनाएं और उसमें सुधार करें। सुधार करने का मतलब ये कि आप अपने टाइम को अपने तरीके से एडजस्ट करें। जो भी आप पूरे दिन में करते हैं, ये मेरा डेली शेड्यूल है, तो मैंने इसे इस तरीके से डिजाइन किया है। I wake up at 6 a.m. in the morning. I get up and fold my thrown blanket. I make my bed. I go to the bathroom to freshen up. I wash my hands and face. I brush my teeth to feel completely refreshed. After that, I prepare myself a cup of tea. While sipping my tea, I take a few moments to go through my phone and review my to-do list for the day. Soon after, I wake my son up. I feed him and get him ready for school. Around 10 a.m., I drop my son off. Once I return home, I have my breakfast, and after finishing it, I take a relaxing shower. Then comes one of the most important part of my day. I dedicate the next 3 hours to practicing my English speaking skills. At around 2 p.m., I have my lunch, and by 2:30 p.m., I leave to pick up my son from school. When we get back home, I spend some quality time playing with him. By around 4 p.m., he takes a nap for about 2 hours. During this time, I again focus on improving my English speaking. He wakes up around 6 p.m. and from then until 10:30 p.m., we spend our evening together, playing, having snacks, enjoying dinner, and sometimes watching TV. Finally, at around 11 p.m., we go to bed, ending the day with a sense of fulfillment. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।